भारत का उत्तरी ऑटोमोटिव हब नाट्रिप नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भारत सरकार के तत्वाधान में एक अग्रणी विश्व स्तरीय ऑटोमोटिव परीक्षण, प्रमाणन और R&D सेवा प्रदाता ऑटोमोटिव और गैर ऑटोमोटिव क्षेत्रों के लिए है। ICAT MoRTH सरकार द्वारा अधिसूचित केंद्रीय मोटर वाहन नियम के नियम 126 के तहत अधिकृत परीक्षण एजेंसियों में से एक है। भारत की ICAT पावर ट्रेन उत्सर्जन एचईवी और ईवी प्रौद्योगिकी NVH क्रैश प्रकाश व्यवस्था निरीक्षण और प्रमाणन और थकान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सेमिनार और कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान साझा करने प्रसार के लिए अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं, क्योंकि भारत 2030 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। I think thanks to Ministry of Heavy Industries, DHI and India, all the government policy initiative PLI, that was actually has brightened the EV journey in India. So that's about legacy, but where do you go from here? I think there is a lot of potential if you look at sector-wise in terms of how things are shaping up in terms of two-wheeler, three-wheeler, buses, four-wheelers. I think जब गाड़ी बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एक रेगुलेशन है कि हम जब गाड़ी बंद भी करते हैं उसके 10 साल बाद तक भी स्पेयर्स देते रहेंगे। ये कानून है। तो जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो भी OEMs कर रहे हैं मुझे भरोसा है कि सारे लोग ये फॉलो करेंगे और देश का कानून है। हम जब लाएंगे हम भी जैसे आज भी IC इंजन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट इन द वर्ल्ड। आप ये देखेंगे 1 मिलियन EVs ऑलरेडी लग चुके हैं और मैं देखूंगा कि नेक्स्ट 5 सालों में इस पूरी सिटी और इस पूरे देश में इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन और ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी की ही जीत हो। थैंक यू वेरी मच। EV के एक बहुत ही अच्छे प्रोग्राम में आया जहां पे आज इस कंट्री में जो हमारी EV की लहर चल रही है वो अनस्टॉपेबल है। और इस शहर दिल्ली शहर में जो कहते हैं जो कभी स्लीप नहीं करती, यहाँ पे और कितने व्हीकल लगेंगे, बहुत सारे। और इस कंट्री में दिल्ली की लीडरशिप ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत आगे है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हीकल्स, बैटरी, इकोसिस्टम बिल्डिंग पूरे स्टेट में हो। Financially viable, so that is what we are making. Are they not already financially viable? Currently, to be fair and to be frank, trucks aren't. Also because we don't get the kind of incentives. Here's where I would disagree a little bit with Mr. Narak. We do need the government. The answer is yes. The reason being, if you look at the electric mobility journey, maybe like commencing from 2015 onwards, when the FAME 2 was launched, and subsequently we had FAME 1 was launched, and subsequently in 2019 we had FAME 2 program. So that at the national level, there is like FAME 1 and FAME 2, which initiated the initial impetus for mobility industry. At the sub-national level, states start releasing out the electric vehicle policy. So Delhi also is one state which had a comprehensive. But like largely like what we're seeing in Delhi is like we have some of the EV charging station where we have put up the solar panels, which are generating solar energy and it is being used for charging the electric vehicles. It makes more sense because when you talk about decarbonizing the transportation sector, sourcing the clean energy makes more sense for at least like fueling the electric vehicles. And out of this, I think most importantly, जो ICAT करता है वो they are around the safety part of it. Because we are more concerned with safety. So we are having lots of regulations to test the vehicles before they are launched and before they are brought to the public through ICAT, and it's safety part of it. And we are a third party kind of a thing, so we are not connected with any of the industry or OEMs or any startups. So that's number one. Number two, analysis with the user. That's वो में काम करना है। क्या वजह हो सकती है, बड़ा मुश्किल है। देखिए आप ये समझें इस चीज़ को कि एक बार गाड़ी में आग लग जाती है तो उसको एनालाइज करना कि कहाँ से आग शुरू हुई होगी बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी बहुत सारे इंजीनियर्स ने इस पे काम किया है, बहुत सारे सरकार के इनिशिएटिव्स हैं जिस पे ये काम हुआ है और इसके आधार पर नए नए स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं। और मेरे ख्याल से अगर आपने मुझे सुना हो तो मैंने यही कहा था, सारे ट्रायल्स करते हैं, लेकिन सरकार को कैसे पता चलेगा कि क्या ट्रायल हुआ? तो उसके लिए संस्थान जैसे ICAT है और भी संस्थान है, ये लोग एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टेस्ट्स हैं, रेगुलेशंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जो सरकार ने ही बनाए हैं
उनके आधार पर हम लोग इनको टेस्ट करते हैं और उनके आधार पर हम लोग ये कहते हैं कि ओके ये गाड़ी भारत में चलने के लिए सक्षम है, चाहे वो गर्मी होगी या सर्दी होगी या बारिश पड़ेगी या and it's in fact it is one of the most exhaustive program which focuses mainly on the controlling the supply chain in the EV sector. Let's decouple the EV in two important parts. One is the battery, that is the storage part, and second is the vehicle. The storage part is actually the end. Being with JZ, there are many activities, there are many projects in the portfolio we are looking into for specifically into sustainable urban mobility as well as e-mobility. For example, I start with you mentioned about this e-auto project. We had this e-auto project with Kochi and Bhubaneswar. There we given 100 electric autos to Kochi and 50 electric autos as a pilot study as a pilot program to Bhubaneswar. And there for the now for the private vehicle category, the bulk of the charging will happen at home or office. And while it's easy to say it will happen, but it's very, very difficult. Barring Delhi, I live in Gurgaon. I have an electric car. I've been pleading with my RWA for 9 months to give me a 15 ampere socket at my parking. Was focused on upskilling and safety, and that's what our focus has been over the last few months. Right? On ground, how do we build that user experience from a driver perspective, from a personal user perspective? How do we have maintenance in place? How do we make the driver feel safe and about driving an EV, and how does he or she think that the vehicle they're driving is reliable? Of course, sector can be India's next growth engine. Respected dignitaries on the stage and friends in the audience, thank you so much again for this opportunity as well as for your patience listening. I wish to specifically focus on feminizing the EV sector to propel India's growth. The electric mobility ecosystem, of course, is well poised for robust growth in the country and will emerge as a key employment generator. Just to touch upon a couple of aspects on that. In terms of one of the biggest challenges that we've had in the supply chain is the kind of the skill sets that you get to maintain, to ensure the transition happens. Now, I'm coming back to this the entire skill set issue, but that is a big kind of a consideration and a challenge. I see EVs the present. And it's not just EV, we are working on hydrogen technology. Hopefully, very shortly, I'm going to be able to show you, the trucks on hydrogen we are working on, but a 3-wheeler with 400 kilometers on a single charge, right? So, but I think India is in a space, I have, we